ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। May this lamp invoke the divinity within all of us. इस दीप की लौ, इस दीप की बाती, इसकी ज्योति हमारे अंदर उस दिव्यता को जगाए जो हमें सतमार्ग पे, सही मार्ग पर आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा देती रहे। इस भाव के साथ दीप प्रज्वलन हुआ। काइंडली टेक योर सीट्स। सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। Dear sisters and brothers, allow us to take the privilege to welcome you all on behalf of Dev Sanskriti University, All World Gayatri Parivar and Uttarakhand Tourism Development Board in this second International Festival on Yoga, Culture and Spirituality, being organized under the aegis of Shanti Kunj Haridwar. We are honored to have with us today our venerated guests, along with the chairperson for the ceremony, Honorable Chancellor Sir and Head All World Gayatri Parivar, आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच में पधारे 20 से भी ज़्यादा देशों से आए हमारे प्रतिभागीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, शांतिकुंज एवं ब्रह्मवर्चस्व परिवार से पधारे हमारे आदरणीय वरिष्ठ जन, देश विदेश से आए हमारे अपने अग्रज कार्यकर्ता भाई बहन एवं समस्त देव संस्कृति परिवार का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। In Vedic culture, guest is considered to be God, Atithi Devo Bhava. And as a devotee would feel blissfully elated upon seeing his God, so are we, filled with enormous joy on having all our distinguished guests and delegates with us today. We welcome you all once again. हम परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि वे अपने कर कमलों द्वारा हमारे विशिष्ट अतिथि गणों का भाव भरा स्वागत गायत्री मंत्र की पवित्र चादर उड़ाकर करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री मदन कौशिक जी, मंत्री पर्यटन, उत्तराखंड सरकार, is the Honorable Minister for Tourism and Development. आपका भाव भरा अभिनंदन, भाव भरा स्वागत सर। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय एमी ब्लेसियो जी, गायत्री देवी जी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ योग फेडरेशन एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। We welcome you, ma'am. We are honored that you are here with us today in this inaugural ceremony of the 5-day-long second International Festival on Yoga, Culture and Spirituality. Dhanyavad, sir. Friends, as the melting glaciers of Himalayas form the holy river Ganga, which flows thousands of miles over plain to reach its goal, its ocean, so have all of us, the seekers of spirituality, gathered here today to take a dip in the ocean of divine knowledge and culture. Dear sisters and brothers, today is also an auspicious day for the whole world, as the United Nations few years ago declared October 2nd, the birth anniversary of the father of the nation Mahatma Gandhi ji, as World Peace Day. This day is also marked as the birth anniversary of the second Prime Minister of independent India, Dr. Lal Bahadur Shastri. As a spiritual and social leader, Gandhiji has not only been the man who brought freedom to India through his spiritual tools of truth and non-violence,
but also shares a close proximity with our own Reverend Param Pujya Gurudev Yugrishi Pandit Shri Ram Sharma Acharya Ji. As Gandhi Ji said, be the change you want to see, Param Pujya Gurudev gave the slogan of हम बदलेंगे युग बदलेगा. जब तक हम में परिवर्तन नहीं आएगा, संसार नहीं बदल पाएगा. Gandhi Ji said, a man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Similarly, Guru Ji also said, as a man thinks and does, so does he become. जो जैसा सोचता और करता है, वह वैसा ही बन जाता है. I would like to quote Albert Einstein here. Generations to come, it may be, will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked on this earth. Unquote. Ladies and gentlemen, so was Mahatma Gandhi. We call him Bapu, the father of our nation. Dear brothers and sisters, Gandhi ji always believed that serving the humanity is none next to serving the God himself. In his evening prayers, he used to recite, Vaishnav Jante Tene Kahiye. Let us all join in this prayer to be performed by the music team of Dev Sanskriti University under the guidance of Dr. Shiv Narayan ji.
like to thank our music team. Sparing no time, we would now like to take our program into its next level. It is indeed a fortune to listen to such people who have an outward zeal towards science and an inward gaze towards spirituality, which steers their inner self. One such eminent personality is the Vice Chancellor of this very university, who has served the statistical institution of highest repute in India as a director, and later decided to become a disciple of Param Pujya Gurudev and explored the Vedic Indian scriptures and their messages. His potential divinity got wings and further scaled heights, and is now creating a blend of science and spirituality under the esteemed guidance of our Honorable Chancellor, sir. Brothers and sisters, we would now like to invite Honorable Vice Chancellor, Dev Sanskriti University, Dr. Sukhdev Sharma ji, to kindly set the theme of this 5-day-long second international festival with his opening remarks. May I request you to begin with chanting of Gayatri Mantra. Om Bhur Bhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Basically it means it's a prayer to the Almighty Supreme God, the creator of the entire cosmos, the essence of our life existence, who removes all our pains and sufferings and grants happiness, beseeching His divine grace to impart within us His divinity and brilliance, which may purify us and guide our righteous wisdom on the right path.
hundreds of millions of Gayatri Parijans, family members of Gayatri Parivar, Gayatri family. I take this opportunity to welcome you all, the distinguished and eminent delegates who have assembled here, sparing their valuable time and traveling long distances over the length and breadth of the globe to join us on the occasion of International Festival on Yoga, Culture and Spirituality at the serene campus of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. Further, it's my honor and proud privilege to honor and welcome the esteemed personalities present on the dais for the inaugural function of the 5 days festival beginning today under the auspicious and in collaboration with the Uttarakhand Tourism Development Board. In particular, I would like to welcome the chief guest of the function today, Honorable Minister of Tourism and Urban Development, Uttarakhand State, Shri Madan Kaushik Ji, sir. I would also like to welcome our most revered Chancellor, sir, the head of all World Gayatri family, Shraddhe Dr. Sahab, Dr. Pranav Pandya Ji, and express my gratitude for sparing his valuable time to bless us on this occasion. I would also like to welcome our guest of honor today, Her Highness Srimati Amy Blessio, Gayatri Devi Ji, the President of International Yoga Federation, on this occasion. I also bow my head to most respected Adarani Bhai Sahab, Vireshwar Upadhyay Bhai Sahab, my colleague Dr. Chinmaya Panda, Pro Vice Chancellor of the University, and Shri Sandeep Kumarji, who is the Registrar of the University. I also extend my gratitude to all other guests and the members from Shantikunj, Brahma Varchas and Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Parivar who are present on this occasion to bless the success of this rare event on the campus. Not the least, I would also like to express my gratitude to the members of press and media who must be eager to cover the event for providing a larger platform to the event through wider coverage in the press and media. Today, I also bow my head to our Rashtrapita, Mahatma Gandhi Ji, because 2nd October happens to be his birthday. So we are also celebrating that birthday today. On this occasion, it's a rare opportunity that we are starting our international festival on this day, auspicious day. This day also happens to be the birthday of our former Prime Minister, late Shri Lal Bahadur Shastri Ji. I bow my head in respect to him also. Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is a university of divine culture. Essentially, is a man-making university encompassing education together with the human values. The sojourn of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya started right early in 1964 when our Gurudev, Acharya Shri, mentioned about his dream in the famous mission magazine Akhand Jyoti. He stated that a university must be established which could mold its students into noble and enlightened human beings, selfless, warm-hearted, compassionate, and kind individuals. He further emphasized that his dreams are not mere daydreams, but they are divine dreams, the Dibya Swapna, which will materialize within a time frame. Dear friends, it took 38 years for the university to become a reality in the year 2002. With a vision of establishing the scientific basis of the yogic disciplines and spirituality, the foundation of Dev Sanskriti University was led, and its core principles have been interwoven in the teachings of the great saints of the modern era, our Param Puja Gurudev, Vedamurti, Taponist, encyclopedia of knowledge, imbibing rigorous penance, Pandit Shriram Sharma Acharya Ji. In its short but resolute journey, this university has emerged as the front runner
of the scientific researches on yoga, Ayurveda, psychology, human consciousness, and spirituality. Along with excellence in the academic forms, one of the major areas of focus for the university is the promotion of intercultural understanding among students. While yoga and Ayurveda stand as the core modules, prayer, meditation, and understanding of other spiritual practices form an integral and vital part of the university's curriculum. These efforts have been widely appreciated, and the university has an established global presence in the field of yoga, Vedic sciences, Indology, and the allied subjects. Several agreements have also been signed with the eminent academic institutions in the world: USA, UK, Australia, New Zealand, Germany, Russia, China, Indonesia, Greece, Denmark, Argentina, and Iran. My dear friends, some of the most distinguishing features of the university are the selfless commitment and the volunteer nature of its family and faculty members and the employees, which prompts our students also to respond with the same vigor and to resonate with the same wavelength, bringing synergies for a very fruitful purpose of knowledge sharing and creating, with a view to ensure fulfillment of the vision of our Param Pujya Gurudev. The students of this university are nurtured, and the entire family stand with them on every step of learning. Our Honorable Chancellor Sir himself takes keen interest in the activities of the students. Ladies and gentlemen, I believe DSVV is the first university where the Honorable Chancellor himself takes classes for imparting teachings from Srimad Bhagavad Gita and initiates the students into meditation so as to mold the young and energetic minds in the right direction. DSVV is a real combination of ancient Gurukula system, imbibing the spirit of the Vedic verses, Sahanahu Yashah, Sahanahu Brahma Varchasam. I feel proud to be part and parcel of this wonderful revival of our ancient educational system for producing real scholars with human touch and ethics and values at the core of their heart, in guiding our nation and the world at large. And I do extend my cordial invitation to you all to be part of this great movement for transforming the individuals and the society. I sincerely hope that this festival shall be a definite step in the direction of sharing the wealth of information and propagation of the knowledge obtained in our unique and historic expedition so far. I am sure that this festival will provide a platform for the meaningful exchange of opinions on the various challenging issues faced by the modern world, connecting yoga, culture, and spirituality. At this serene spiritual campus, I am sure you would all enjoy your stay during the International Festival in Yoga, Culture, and Spirituality, and enrich the deliberations by your active participation. I do believe that the subtle powers of Rishi Satta, the kingdom of sages, will enlighten your path with peace and prosperity. Om Shanti, Shanti, Shanti. We heartily thank you, sir, for setting such a wonderful theme. And I'm sure, as sir was mentioning, the chief facets of this 5-day international festival, all of us will be experiencing the divinity, the spirituality through various sessions in the next 5 days. हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री A.K. सिंह जी का भी। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री A.K. सिंह जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं टूरिज्म बोर्ड के। श्री शैलेंद्र शंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं आज, जो कि फाइनेंस कंट्रोलर हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के, और सुशील नौटियाल जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आप सभी का स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन। Yoga, an ancient but perfect science, deals with the evolution of humanity. This evolution includes all aspects of being, from bodily health to self-realization. And that is why, in spite of having its deep roots in Indian Vedic culture,
yoga has grabbed great attention globally as the remedy to human sufferings. And we are honored to have with us an eminent personality with a research experience of over 4 decades in this very domain of yoga. Honorable Emi Blesio-ji was initiated by Honorable Dr. Saab and Shraddha Ji as Gayatri Devi at Shantikunj. आपका जो initiation हुआ वो गुरु डॉक्टर साहब और जीजी ने किया और अब उन्हें हम गायत्री देवी के नाम से जानते हैं. She is the president of many reputed organizations. I would like to request Gayatri Devi ji to kindly give the keynote address to all of our participants. Honorable Gayatri Devi. Thanks. I'm very happy to be here in this huge festival. Mostly because I was here a lot of time ago, and I take my name here. And also because this day is dedicated also to Gandhi, Gandhiji, Mahatma Gandhiji. Normally in my school, I have a big celebration for this day. Now I celebrate in another family very close to me. So I'm very honored to be here. I want to tell you, my secretary translate for me because my English is not very well. She introduced me what I am doing in this, my work, in my duty in the world of yoga and the culture and the spirituality. Emi Blesio is founder and president of the World Community of Indian Culture and Traditional Disciplines, of the official Italian Yoga Confederation, of the International School of Yoga, Art, Culture, Suryanagara, and of other international organizations. She has created, and she is art director of the Festival of India, West Meet East, and of the Symposium of Spirituality called Rays of a Unique Light. She has more than 45 years experience in yoga, pranayama, meditation, mythology, and philosophy. In 2007, in Mumbai, she has been awarded at honorem with the title of Pandit for his dedication in culture and studies field. And in New Delhi, in January 2008, she has been elected president of the International Yoga Confederation and of Women. In 2008, with the title of Mahamandaleshwar, and in 2010, with Feroz Gandhi Saji Saman, and she is Ambassador of Peace. I want to speak about, I want to speak about yoga in a Western place because now we are trying to spread the ancient tradition of yoga. I try to put the basic, very basic, meglio che ti parlo all'inizio. Ho pensato nello yoga che è molto importante riportare la tradizione. It's important in yoga, I have thought, to follow the tradition.
e soprattutto andare alle origini dove lo yoga è nato. And turn back to the roots of yoga, where yoga has born. Abbiamo cercato anche di far conoscere ancora di più il saggio Rishi Patanjali. We have tried to spread the knowledge of the great Rishi Patanjali, che è stato il padre dello yoga. That has been the father of yoga. E questo mi sento come mio impegno a portare questo messaggio, e soprattutto in un luogo dove è cominciato una confusione dello yoga, che è l'Europa e anche la parte occidentale. And I feel the need to spread this message in Western countries, where there's a little bit, where nowadays there's a little bit confusion. Dopo 45 anni di yoga, after 40 years experience in yoga, io penso che sia importante ridare la sacralità di questo messaggio. I think that is important to give back to yoga is sacredness, the sacredness of his message. Questo perché mi sono accorta che con la moda di oggi si dà un termine di yoga anche a cose che sono proprio il contrario dello yoga. Because with modernity, yoga today has become like fashion. And it's not proper to give this definition to yoga. Tante volte è anche il contrario stesso dello yoga, quello che yoga della risata, yoga bike, yoga. Sometimes they propose something that is the opposite of yoga, that have nothing in common with yoga. For example, laughing yoga. Perché questo è come snaturare il messaggio. It's not the real message. We lose the real truth, the real nature of the message, of the original message. Non dico che questo non sia importante, per esempio una terapia della risata è molto importante perché elimina delle tensioni. Yes, laughing is a therapy because it can help you to remove tensions. Yes, it can help you. Ma è importante capire che non è yoga, perché lo yoga è autocontrollo e disciplina, mentre una risata deve essere senza controllo per poter essere terapeutica. Yoga is control, is discipline and needs self-control, but a real laugh must be spontaneous in order to be therapeutic. Questo mi ha fatto capire che non abbiamo capito molto dello yoga. And this made me understand that we haven't understood a lot about yoga. E questo purtroppo sta arrivando un pochino anche in India, questa moda sia solamente di parlare in senso fisico dello yoga e dimenticare un po' lo spirituale. And this thing is arriving here too, and we forget the spiritual part of yoga. Not here, in India. Yes, in India, here, here in India, here in Sant'Icungia. Sant'Icungia is a lot of spirituality. So, io credo che ci voglia una base di spiritualità. We need a base of spirituality. Perché a forza di fare tutte queste fusioni, usare piccole tecniche e allargarle in un modo quasi al parossismo, ovviamente si perde proprio la natura stessa di quello che è lo yoga. Because with these fusions we lose the real nature of yoga.
E al posto di essere una fusion diventa una confusion. And fusion becomes confusion. Questo è molto importante da capire, che andando alle radici dello yoga, This thing is very important to understand, that going to the real roots of yoga, dalle sorgenti, le radici, from the sources, questo fa sì che la pianta dello yoga possa dare frutti e fiori e frutti. the tree of yoga in this way can produce flowers and fruits. Se invece noi tagliamo le radici, If we cut the roots, noi abbiamo solo una cosa secca, che diviene una cosa secca. we just have a dry thing, a sterile thing. Lasciando le radici, che sono basicalmente qua in India, andando a scoprire le radici che sono qua in India, Discovering the roots that are here in India, possiamo fare in modo che la pianta dello yoga possa dare frutti, fiori e frutti. we can make this plant produce fruits and flowers. Questo è un messaggio che io mi sento di dover espandere in Occidente. This is a message that I really feel deeply to spread in Western society. Io sono in India molte volte all'anno, I'm here in India many times during the year appunto per cercare queste radici in order to look for these roots e cercare di farle conoscere anche all'estero. and to let them know abroad too. E quale meglio posto di questo, And which better place than this one, dove c'è questa grande filosofia, where there's this big philosophy, la spiritualità. spirituality. L'uomo è fatto di tre cose: fisico, spirito, psiche e spirito. We have three aspects: physical, psychological, and spiritual. E quindi dobbiamo tenerne conto quando noi portiamo avanti un messaggio. And we have to keep into consideration these three aspects when we bring a message. La parte fisica è importantissima, The physical part is very, very important anche perché il nostro corpo ha bisogno di far silenzio. because our physical body needs silence, needs to be kept in silence. Quindi asana è molto importante. Asana is very important. Però è molto importante anche il pensare, la mente. But our mind, the way of thinking is important too. E yoga tiene presente anche questo. And yoga keep into consideration this also. But senza spirito, lo yoga non è completo. But without spirit, yoga is not complete. Quindi tutti e tre insieme fanno l'essere umano. All of them makes human being E uno yogi. and a yogi. Questo è importante da capire, anche perché tante volte si parte soprattutto all'apparenza e poco alla sostanza. Many times it happens that we start from appearance and not from the real substance. Soprattutto in questo momento, sia in Occidente sia qua, perché c'è una globalizzazione di messaggio. And above all, in this nowadays, in this context where globalization is spreading and In questo contesto è difficile capirlo, però se noi continuiamo noi stessi riusciamo a coinvolgere anche tutto il resto. Come diceva Gandhi, dobbiamo essere noi il messaggio, la nostra vita deve essere il messaggio che portiamo agli altri. as Gandhi said, our lives must be the message that we bring to others, even in this time of globalization and confusion. The globalization can help us. Maybe potrebbe essere un danno, però è anche una possibilità di poter lanciare un messaggio positivo. It could be a damage, but it could also be seen as an opportunity to spread this message Tutto il mondo.
worldwide, in all over the world. Io ringrazio per l'opportunità che mi avete dato di parlare. I qua. thank all of you for the opportunity that you gave me to. Dr. Pranab Pandya, I thank you. And I thank you, the audience. Hari Om Tat Sat. थैंक्स मैम फॉर द वंडरफुल की नोट एड्रेस। आपने जैसे कि अपनी की नोट एड्रेस में बताया कि कैसे गुरुजी के विचारों से आप प्रभावित हैं और शांति कुंज में आके ही दीक्षा हुई, नाम परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन बहुत पहले से जो काम कर रही थी उसमें हुआ, और योग को जीवन जीने की एक कला के बारे में आपने बताया कि योग की जड़ें भारत में हैं लेकिन इसके फल, इसके फूल, इसका लाभ पूरा संसार आज ले रहा है, इसका क्रेडिट भारत को जाता है। Uttarakhand, abode of God, famous as the paradise on earth, blessed with the celestial ambience in the lap of holy river Ganga and in the shelter of Himalayas. This is the place which has attracted many sages, seers, and saints. This land has been known as the place where many souls have attained enlightenment and many completed their intense austerities. Sisters and brothers, we are glad to have with us our very own MLA Sahab, our very own Minister Sahab for Tourism, Urban Development and Sugarcane Industry, Shri Madan Kaushik ji. Madan Kaushik ji जो कि उत्तराखंड के टूरिज़्म को प्रतिदिन बढ़ावा देने के लिए मेहनत करते रहते हैं, हमारे अपने MLA हैं और शांति कुंज और विश्वविद्यालय से बहुत गहरा संबंध है। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सर और आपसे निवेदन करते हैं, एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं आप खंडूरी जी की कैबिनेट में, आप प्लीज़ आएँ डाइस पे और हम सभी को अपने प्रवचन से लाभान्वित करें। श्री मदन कौशिक जी। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, आदरणीय गायत्री देवी जी, वीरेश्वर उपाध्याय जी, कुलपति डॉक्टर सुखदेव शर्मा जी, उपकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, पर्यटन विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित सभी आदरणीय बहनों भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह के रूप में हम वर्ष में 2 इवेंट्स करते हैं। एक ऋषिकेश में परमार्थ पार्टनर के रूप में वहाँ कार्यक्रम होता है। दूसरा हमने 2 साल पहले यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। योग जिसने पूरी दुनिया में न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया में उत्तराखंड ने एक अपना नाम कमाया है, उस योग के माध्यम से हम किस प्रकार से इस राज्य में पर्यटन को और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके मूल में हम लोगों ने विचार करके इस प्रकार के ये वर्ष भर में 2 कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। अनेक देशों के हमारे प्रतिनिधि इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। निश्चित रूप से हम इस उत्तराखंड राज्य में उन सभी विषयों पर, उन सभी इस प्रकार का चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य पर्यटन की दृष्टि से पूरी देश और दुनिया में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए। पर्यटन के लिए जो 2 चीज़ बहुत जरूरी है,
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 4.5 वर्षों में, उससे पहले 5.5 वर्षों में एक पूरा प्लान के तहत पर्यटन विभाग ने निरंतर गति प्रदान की है। आज जब हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी की तरफ नज़र मारते हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य ने पिछले 10 वर्षों में एक बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। जहां राज्य बनने के बाद केवल हम इस चीज़ पर विचार करते थे कि यदि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो उस राज्य में पर्यटन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, तो हमने इस दिशा में, चाहे एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, इन तीनों में हम लोग अपनी जो ऊंचाइयां थी उनको प्राप्त किया है। जहां देहरादून को केवल यदि हम एयर की बात करें तो एक रूटीन फ्लाइट आती थी, आज 4 रूटीन फ्लाइट हैं। नाइट लैंडिंग की सुविधा बहुत जल्दी प्रारंभ हो रही है। पंतनगर को हमने रूटीन फ्लाइट से जोड़ा है। हेली सेवा इस प्रदेश में एक बहुत तेजी के साथ हमने बढ़ाने का काम किया है। हिमालय दर्शन हो, 4 धाम यात्रा हो, उस दिशा में पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से अमूलचूल कार्य वह निश्चित रूप से इस प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रोड्स निश्चित रूप से किसी भी राज्य के विकास में, खासतौर पर पर्यटन को यदि हम चर्चा करते हैं तो एक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। उस दिशा में न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सभी मार्गों को तेजी से हमने सुधार की तरफ बढ़ाया है। हम लोगों ने इस प्रदेश के अंदर बहुत तेजी के साथ एडवेंचर पर काम किया है। आज हम देखते हैं कि न केवल देश में अपितु दुनिया में हम लोगों ने पिछले वर्ष साउथ एशियन गेम कराकर एक बहुत बड़ा नाम इस राज्य ने कमाया है। स्केटिंग और स्कीइंग के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग और स्कीइंग हमारे पास उपलब्ध है। अभी जब हम लोग साउथ एशियन गेम यहाँ पर करा रहे थे तो विभिन्न देशों के जो एक्सपर्ट लोग आए थे, हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जितना अच्छा स्लोप आपके पास है, निश्चित रूप से केवल एशिया को यदि हम छोड़ दें तो यूरोप में भी आप उसके बराबर का स्थान रखते हैं। और यदि इसको हम 1 किलोमीटर थोड़ा और ऊपर, मैं होली की बात कर रहा हूँ, बढ़ा दे तो फिर इसमें हम ओलंपिक जैसे खेल भी यहाँ पर कराने के लिए सक्षम हो जाएंगे। स्केटिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा अपने यहाँ कराई, अपितु अपने देश के उन होनहार लोगों के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने इसको पूर्ण रूप से खोलने का काम किया है। आज हम यदि बात करते हैं राफ्टिंग की, तो राफ्टिंग पहले केवल गंगा जी में हम लोग करते थे, लेकिन आज राफ्टिंग को लेकर हम देखते हैं कि हमने, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो टोंस हो, चाहे वो शहरी नदी हो, हमने सब में उसके विकल्प खोलकर और उसमें काम करना प्रारंभ किया है। टोंस नदी में हमने नेशनल लेवल की पूरी प्रतियोगिता इस साल हमने संपन्न कराई है और उसके परिणाम भी निकल कर आए हैं। अगर हम आज कॉर्बेट की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ में, तो हमने पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान इस रूप में रखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो टाइगरों की है वो हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य में है। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं कॉर्बेट पार्क को, और आज कॉर्बेट ने केवल भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में एक अपना जो स्थान है उसको प्राप्त किया है। कॉर्बेट को हमने
जहाँ एक साइड से केवल रामनगर से खोलते थे, हमने कोटद्वार से उसको प्रारंभ किया है। इसी प्रकार से हमने नेशनल पार्क को भी जनता के लिए कैसे खोले, इसमें भी हमने वर्क किया है। हमने पिछले 4.5 वर्षों में जहाँ पर्यावरण को बचाते हुए अपने सारे उन स्थानों को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं हमने जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक आवश्यकता हमारी थी, हमने उसमें भी बहुत काम किया है। आज 4 धाम यात्रा की बात हम करते हैं तो चारों धाम पर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लगाकर और पार्किंग से लगाकर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसमें हमने बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। अभी गंगोत्री में हमने एक नई शुरुआत की है और उस शुरुआत में हम लोग गंगोत्री को एक व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से हम बसाएं, उसमें हम प्रारंभ जो हमने उसका किया है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, उसमें एसटीपी भी है, उसमें कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी। उसमें पार्किंग 6 किलोमीटर पहले कौन सी गाड़ी रुकेंगी, 4 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले स्थान तक कौन सी जाएंगी, पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू हुआ है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इस राज्य को हमने पर्यटन की दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। हमने 2022 तक का पूरा मैप इस राज्य का तैयार किया था और हमने एक कल्पना की थी कि 2022 तक इस राज्य के अंदर 8 करोड़ पर्यटक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2002 में। लेकिन 2010 और 11 के आंकड़े यदि हम उठाकर देखें और उसमें हरिद्वार ऋषिकेश को हम सम्मिलित करें तो 8 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट 2010 और 11, कुंभ की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़कर बता रहा हूं, सामान्य वर्ष भर में 8 करोड़ टूरिस्ट इस राज्य में आते हैं। जब मैंने ये चर्चा, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही थी दिल्ली में, मैंने ये चर्चा की तो निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है और उस राज्य में 8 करोड़ टूरिस्ट प्रतिवर्ष आते हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं नेशनल के जो पूरे आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए उसमें यदि हम वो केवल उन टूरिस्ट को मानते हैं जो 24 घंटे या उससे ज़्यादा किसी राज्य में ठहरते हैं, उनके अनुसार भी लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट ऐसे इस राज्य में आते हैं जो 24 घंटे या उससे ज़्यादा राज्य में रुकते हैं। और उस दिशा में हम पूरे देश में हम 6ठा स्थान रखते हैं। केवल 5 राज्य इस राज्य से ज़्यादा टूरिस्ट अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन केवल सरकार के बलबूते पर हम इस राज्य को टूरिस्ट प्रदेश बना दें, केवल सरकार के बलबूते पर हम ये सारे काम कर ले, संभव नहीं है। हमें सामाजिक संगठन, इस क्षेत्र में इंडिविजुअल, सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आज सरकार जब काम करती है तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे सारे आयामों पर काम करती है, ऐसे सारे संस्थाओं को कोशिश करती है कि वो सरकार के साथ खड़े होकर काम करें। उसमें मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि 2 वर्ष पूर्व जब हमने बैठकर इसकी चर्चा की कि हम ऋषिकेश में इस प्रकार के एक इवेंट्स करते हैं, चूँकि योग एक ऐसा माध्यम बन गया है किसी भी प्रदेश में उसको जोड़ने के लिए कि जिसकी रुचि आज पूरे यूरोप को यदि हम कहें तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित करती है। और आज यदि हम देखते हैं तो ऋषिकेश में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या केवल इस दिशा में हम देखें, या तो एडवेंचर को लेकर या योग को लेकर बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित हो रहे हैं। और इस राज्य के अंदर 1.5 लाख विदेशी टूरिस्ट आता है। उसमें से यदि हम कहें कि केवल वाइल्ड लाइफ या एडवेंचर या योग, वो केवल इन्हीं 3 में सबसे ज़्यादा आते हैं। और इस दिशा में जब मैं डॉक्टर साहब से चर्चा की तो डॉक्टर साहब ने इसको शहर स्वीकार करते हुए कहा कि यदि देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज सरकार के ऐसे किसी प्रयासों के लिए और मददगार साबित हो सकता है तो ये निश्चित रूप से हम लोग इसे आगे बढ़कर करेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, मैं बधाई देना चाहता हूं देव संस्कृति विश्वविद्यालय को, मैं बधाई देना चाहता हूं शांति कुंज को कि जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में इस दिशा में उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और आज जब हम देखते हैं कि कोई सामान्य बात नहीं है किसी इस प्रकार के कार्यक्रम में 19-20 देशों के लोग आए, तो वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि
हम लोग बेसिकली जो हम टूरिज्म की बात करते हैं वो प्रेजेंटेशन, हम दिखाना चाहते हैं हमारे यहाँ क्या है। और जब हमने योग के लिए बातचीत की कि हाँ उत्तराखंड राज्य ऐसा है जो योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम पूरी दुनिया को उस योग की विधा से अवगत कराना चाहते हैं। जहाँ रामदेव जी प्रमुख रूप से एक मैं ब्रांड एम्बेसडर कहूँगा उत्तराखंड के, देश के, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है। वहीं मैं शांति कुंज को भी इस रूप में कहना चाहूँगा कि आपने केवल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से ही नहीं